Assalamu alaikum, my dear students. Hope and pray you are all fit as a fiddle. So today in this video I'm going to explain the poem line by line. So what did we do yesterday? We talked about the poet Pablo Neruda, and we also talked about the brief introduction of the poem. From I explain a few things. So before coming to the analysis of the poem, let me tell you a brief and quick summary of the poem. The poem, from I explain a few things, represents the past and present of Spain. The poet describes the past of Spain as immensely beautiful place with flowers, beautiful houses and fresh vegetables all around. The Spanish Civil War broke out in 1936 and lasted for 3 years, and suddenly the mood of the poet changed. He begins to write about the bloodshed, the brutal murder of his Spanish friends, and destruction all over. So now let's read the poem. Let's get started. I lived in a quarter in Madrid with bells, with clocks, with trees. From there could be seen the dry face of Castile like a sea of leather. My house was named the House of Flowers because everywhere geraniums exploded. It was a beautiful house with dogs and little children. So my dear students, in this poem, the poet in the first half of the poem describes the immense beauty of Spain, and he also describes the place where he used to live. He talks about the beauty of that place, and he talks about the distinctive features of Spain. He says, I lived in a quarter in Madrid. So he says that once he was stationed in a suburb, in a quarter in Madrid. यानी ये मैड्रिड के एक quarter में रह रहा था, with bells, with clocks, with trees. So my dear students, this Madrid has got everything that's needed in a busy and prosperous city. It has got bells, it has got clocks, and it has some beautiful trees. So ये जो Madrid place थी, Madrid is actually the capital of Spain. So it was a very fascinating, it was a very charming place. वहाँ पे कुछ गिरजाघर की घंटियां भी थी, वहाँ पे कुछ क्लॉक्स भी थे जो कि इन टॉल बिल्डिंग्स पे लगे थे, एंड वहाँ पे कुछ प्यारे प्यारे दरख्त भी देखने को मिलते थे. So this is the beauty, this is the prosperity of Spain. He talks about the serenity, the calmness of Spain, right? From there could be seen the dry face of Castile. So आप देखो इस प्लेस की इतनी ब्यूटी थी कि one can easily view Castile. यानी इस प्लेस से इंसान स्पेन का मरकजी हिस्सा भी देख सकता था, कैस्टील को भी देख सकता था. So what is this Castile? Castile actually ट्रेडिशनल सेंट्रल रीजन है स्पेन का, जो कि कॉन्स्टिट्यूट करता है मोर देन 1/4 ऑफ द एरिया ऑफ पेनिनसुलर स्पेन. ठीक है, ये कैस्टील. सो ये कैस्टील कैसे दिख रहा था? लाइक ए सी ऑफ लेदर. ये मानो जैसे चमड़े के एक समंदर जैसे दिख रहा था. ठीक है. सो व्हाट इज द सी ऑफ लेदर? सी ऑफ लेदर का मतलब होता है रफ ओशन और फुल ऑफ लाइफ. यानी actually this place, this Castile, it was
reverberant with life and activity. There was much hustle and bustle. यहाँ पे काफी ज्यादा शोर और गुल था, यानी लोगों ने डिफरेंट काइंड ऑफ अटायर्स पहने थे, यानी उनके चमड़ों के कपड़े पहने हुए लोगों का समंदर जैसे दिख रहा था। ठीक है, वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ थी, लोग पीसफुल थे, लोग एंजॉय कर रहे थे। ठीक है, माई हाउस वॉज नेम्ड द हाउस ऑफ द फ्लावर्स। तो फिर ये अपने हाउस के बारे में बात कर रहा है, जहां पे स्पेन में रह रहा था, जिस मकान में ये रह रहा था, ये उस मकान को बोल रहा था ये फूलों वाला घर है, यानी द हाउस ऑफ द पोइट was named as the house of flowers because everywhere geraniums exploded. So क्योंकि हर जगह पे भरपूर फूल खिले हुए थे, geraniums sprout हो रहे थे, they were blooming. So what is this geranium? Geranium is actually a plant with which red or white flower often grows in containers or gardeners. ये सफेद या लाल फूलों वाला पौधा है। ठीक है, सो यही एक्सप्लोड हो रहे थे, यानी स्प्राउट हो रहे थे, ब्लूम हो रहे थे, खिल रहे थे हर जगह से। इट वॉज अ ब्यूटिफुल हाउस, यानी ये बोल रहा है कि इट वॉज अ मार्वलस हाउस, यानी जो द सीनरी ऑफ द हाउस along with its surroundings looked pleasant and attractive, giving a feeling of satisfaction or enjoyment to the poet. ठीक है, with dogs and little children. ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हाउस होता है क्योंकि इसमें डॉग्स भी होते थे एंड लिटिल चिल्ड्रन भी थे, और ये जो कुत्ते और बच्चे थे वहाँ पे, ये बहुत ज़्यादा मौज मस्ती करते थे। दे वर मैरी मेकिंग, दे वर frolicking everywhere, they were going from one place to another place, and this is the beauty of Spain. ठीक है, so उसके बाद roll, you agree Rafael, Federico, you agree, beneath the earth. Now the poet gives a desperate call to his friends who are no more now, they are beneath the earth, and all of you know Raul, Rafael and Federico. They were the famous poets of Spain, and they were assassinated in civil war. ठीक है, now they are lying beneath the earth. अब ये नहीं है, लेकिन फिर भी ये इनसे मुखातिब होकर कहता है, कुछ कन्फर्मेशंस चाहता है कि आप मेरी बात से मुत्तफिक है, आप एग्री कर रहे हैं कि जो भी मैंने बोला अपने मकान के बारे में, मैंने इसको डिस्क्राइब किया एज ब्यूटीफुल, डू यू एग्री और नॉट। हाँ, अगर वो जिंदा होते तो डेफिनेटली वो हाँ बोलते। यू एग्री अबाउट माई हाउस विद बालकनीज। हाँ, क्या आपको पता है, क्या आप इस बात से मुत्तफिक है कि मेरे घर के कुछ बालकनीज थी। ठीक है, वेयर द लाइट ऑफ जून ड्राउनर फ्लावर्स इन योर माउथ, इट हैज गॉट डबल मीनिंग, यानी लाइट ऑफ जून के साथ ही इनके अंदर एक स्ट्रेंथ आ जाती थी, एक इंथुजिज्म आ जाता था, तब जाके ये ब्यूटीफुल पोएम्स कंपोज कर पाते थे, यानी विद द लाइट ऑफ द जून। लेकिन यहाँ पे इसकी और एक मीनिंग भी हो सकते, यानी he addressed his dead friends that do you agree that my house has some balconies, and with the coming of the June, with the advent of the June, the flowers grew so high that they reached the mouth of a person. ठीक है, यानी जून के आने से ये फ्लावर्स इतने ज्यादा ऊंचे उगते थे कि जैसे मानो ये एक इंसान के मुंह तक पहुंच जाते थे। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस हाउस। ब्रदर, यानी नाउ ही कॉल्स दीज डिसीज्ड पर्सन्स, डिसीज्ड पोइट्स, हिज ब्रदर्स। ठीक है, भाई कहकर इनको पुकारता है। The built of houses with a cold sun on which the weather vane tires. Now he talks about the beauty of his house, the beauty of the roofs of his houses. ठीक है, he says that it looked very beautiful, it looks very magnificent and marvelous. ठीक है, the built of house with a cold sun, और winter sun में भी बिल्कुल ये खूबसूरत दिख रहे, on which the weather vane tires. So weather vane का मतलब होता है, ये वो आला होता है जो आंधी या हवा का रुख बताता है। ठीक है,
It's actually a pointer with a flat blade at one end, which is put on top of high building and turns round in the wind to show which way it's blowing from. ठीक है, यानी actually the roofs of the houses had such a pattern that the rays of the sun fell directly on them, and it provided great relief from the strong and cold winds whose direction was caught and given by the weather van. ठीक है, अब ये वेदर वैन भी थक गई थी. ठीक है, वेदर वैन. ठीक है, the fine frenzied ivory of potatoes, tomatoes multiply down to the sea. यानी इसके हाउस से इंसान ये भी देख सकता था, इन चीज़ों का भी नज़ारा कर सकता. वन कैन easily see the rich crops of potatoes and tomatoes, and they were stretching, they were extending up to the sea. यानी जो आलू और टमाटरों के कतारें चारों ओर समंदर तक नजर आ रही थी. The fine frenzied ivory means rich crop vegetables. ठीक है, यानी ये समंदर तक नजर आ रहे थे. So this is the he in the first half of the poem he talks about the serenity, he talks about the calm and composedness of the place called Madrid. So inshallah in the next video we'll carry forward the poem. So I'll stop here, let's call it a day. Thank you, bye bye, take care, Allah Hafiz.